हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज करंट मिरर सर्किट। सो इन ICs द BJT biasing is done with the help of current mirror circuits. We cannot use any other biasing schemes that is self bias or emitter bias or collector bias in case of IC। तो यहाँ पे हमने जैसे हमारा वोल्टेज डिवाइडर बायस और द सेल्फ बायस सर्किट लिया है एंड हियर यू कैन सी दैट वी हैव आवर रेजिस्टर्स R1 एंड R2 जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज होती है। नाउ इफ वी कंसिडर अ सिलिकॉन चिप विच हैज अ विड्थ W, a length L and thickness T, तो इसका एरिया इज गोइंग टू बी इक्वल टू W टाइम्स L। बात करें हम लोग इसके रेजिस्टेंस की विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू रो L बाय A, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी। नाउ वी नो दैट इफ वी इंक्रीज अ रेजिस्टेंस हमारी लेंथ भी इंक्रीज करने वाली है बिकॉज रेजिस्टेंस एंड लेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। So if the resistance is large, then length is also going to increase, which is going to increase our chip size. And ये चीज हम लोग avoid करना चाहते हैं. So this is the exact reason why we use current mirror circuits in case of BJT biasing in ICs. So here we have our current mirror circuit and इसका name काफी ज्यादा resemble करता है इसके circuit को. So in this case, our input current is going to be equal to our output current. Now here we have our IC1 current and here we can see that collector and base junction हमारा यहाँ पे connected है. So we are going to consider that IB2 current right side flow हो रहा है and IB1 current is flowing left side. And here Q1 and Q2 are our transistors. This particular part is our R output or the output resistance and VBE1 and VBE2 are our voltages. Now in case of current mirror circuits, हमारे Q1 and Q2 transistors should be identical. So what do we mean by identical is that the IC1 should be equal to IC2, the IB1 should be equal to IB2. And another condition that we have to follow in this particular circuit is the beta value should be very very high. तो अगर हम लोग हमारा इनपुट करंट मान के चल रहे हैं so we can get the value as IN is equal to IC1 plus IB1 plus IB2. Now here we have seen that कि हमारे ट्रांजिस्टर्स आइडेंटिकल है ड्यू टू विच IB1 is equal to IB2. तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं IN is equal to IC1 plus 2 times IB1. अब IB1 को भी हम लोग IC के टर्म्स में लिख सकते हैं. So we know that IC is equal to beta times IB. तो IB is going to be equal to IC1 by beta. तो यहां से हम लोग IC1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं which is equal to IN by 1 plus 2 by beta. एंड क्योंकि हमारे करंट मिरर सर्किट्स में इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज सेम होता है सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ आवर आउटपुट करंट एज वेल विच इज इक्वल टू IN बाय 1 plus 2 by बीटा. अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें दैट आर बीटा इज मच ग्रेटर देन 1 तो ये वाला पार्ट हमारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड वी आर गोइंग टू हैव आवर एक्सप्रेशन दैट वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर करंट मिरर सर्किट दैट इज I आउटपुट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I इनपुट. अब यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेट करनी हो द वैल्यू ऑफ आवर आउटपुट रेजिस्टेंस सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू VA विच इज आवर अर्ली वोल्टेज प्लस VCE बाय I आउटपुट. अब अगर हम लोग VCE को एक बार नेग्लेक्ट कर दें वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस एज VA विच इज आवर अर्ली वोल्टेज डिवाइडेड बाय I आउट विच इज आवर आउटपुट करंट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ दिस सर्किट. सो ये वाला हमारा सर्किट कैन बी यूज्ड एज एन एक्टिव लोड जिसकी वजह से हमारा वोल्टेज गेन काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है एंड अ साइज ऑफ द IC हेल्प्स इन reduces. Now let us talk about the limitations of the basic current mirror circuit. So if we need very small output current approximately in microampere तो उसके लिए हमारा resistance should be in mega ohm. But because of this we will need a greater chip area जो कि possible नहीं है in our basic current mirror circuit. So for that we have our Wilder current source. So basically this circuit is used for small output current and it is used for large output resistance. So here we have a circuit and यहाँ पे हमने बस एक emitter resistance को लास्ट में कनेक्ट कर दिया है. And we know that our output resistance is equal to VA by I output. अब इस circuit के through we are going to prove that our input current is going to be much larger than the output current. तो उससे पहले we will have to see a basic thing that is let us say we have a diode and IF current is flowing through it. तो
तो IF को वी कैन राइट एज I नॉट टाइम्स e टू द पावर VD बाय ईटा टाइम्स VT। तो अगर इसी चीज को हम लोग Q1 ट्रांजिस्टर के हिसाब से लिखें थ्रू विच आर एमिटर करंट इज फ्लोइंग, सो इट कैन बी रिटन एज IE is equal to IE naught e to the power VB, which is the biasing voltage, by eta times VT. And here we are going to consider eta is equal to 1. So we are remaining with this particular formula. अब हमें निकालनी है यहाँ से VB की वैल्यू. So for that we are going to take log both sides. So we are going to get the value of VB as VT times log IE by IE naught, where VT is a thermal voltage. अब हमें निकालना है VB1 एंड VB2. सो अगर हम बात करें पहले इनपुट साइड की, सो वी नो दैट इन केस व्हेन बीटा इज वेरी लार्ज आवर एमिटर करंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कलेक्टर करंट. तो यहाँ पे जो हमारे करंट पास हो रहे हैं वी आर गोइंग टू कंसिडर देम एज सेम. सो हियर वी कैन सी दैट इन केस ऑफ VB1 हमारा करंट हो जाएगा IN एंड सिमिलरली इन केस ऑफ VB2 हमारा करंट हो जाएगा IOut. सो वी विल हैव द फॉर्मूला ऑफ VB1 एज VT times log IN by IE naught and VB2 as VT times log by IE out by IE naught. अब इस particular loop में we are going to apply KVL. So we are going to have the equation as minus VB1 plus VB2 plus IE out RE is equal to 0. And इसको अगर हम लोग थोड़ी बहुत shifting करें, we are going to get the value of IE out RE is equal to VT times log IN by IE out. Because we know the value of VB1 and VB2 already. So we just have to put them in this particular equation. अब हमने prove करना है that our input current is much greater than our output current. So उसके लिए we know that VB1 can be written as VB minus VE. And इस केस में हम लोग देख सकते हैं that our emitter part is connected to the ground. So VE is going to be equal to 0 and we will be left with VB. So the value of VB1 is equal to VB. Similarly हम बात करें हमारे VB2 की, so that is also going to be equal to VB minus VE, and इस केस में we can see that VE is going to be equal to I out multiplied by RE. अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं that our VB1 is going to be much greater than our VB2. अब हम लोग इनके फॉर्मूलाज को अगर कंपेयर करें, so we can see that हमारा VB1 is directly dependent on the input circuit or the input current, and our VB2 is directly dependent on our output करंट. सो अगर हमारा VB1 बहुत ज्यादा है दैट मीन्स हमारा इनपुट करंट भी बहुत ज्यादा होगा, एंड अगर हमारा VB2 काफी कम है दैट डेफिनेटली मीन्स हमारा आउटपुट करंट काफी कम होगा. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट आवर इनपुट करंट इज much ग्रेटर देन आवर आउटपुट करंट. सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.